Hello everybody. Question is, suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of m, l and t, that is x is equal to m की power a, l की power b, t की power c. The quantity mass can always be dimensionally represented in terms of lt and x, can never be dimensionally represented in terms of lt and x, may be represented in terms of lt and x if a is 0, may be represented in terms of lt and x if a is never 0. x की डायमेंशन है m a l b t पावर c. m a fundamental quantity mass cannot be represented by only l and t. x की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से अगर m will be equal to x l b t की पावर c. डायमेंशंस ऑफ m मास m होगा x l b c होल टू की पावर 1/a. First part, can always be dimensionally represented in terms of lt and x. m की वैल्यू हमारी आ जाती है m, अगर हम यहीं लिख लें m x अपॉन l की पावर b t की पावर c एंड होल की पावर हाफ. Can always be dimensionally represented in terms of lt and x. अगर a is 0 तो राइट हैंड साइड becomes 1. If a is equal to 0 तो m हो जाएगा x l b t c. अगर हम 1/0, this is infinite. x l b t की पावर c की पावर infinite. तो this becomes infinite, hence this is not possible. Can never be dimensionally represented in terms of lt and x if a is not 0. तो m को हम लिख सकते हैं in terms of l b t c. रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैंस दिस इज नॉट करेक्ट. मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज 0. अगर a 0 हो जाता है m बिकम्स इनफाइनाइट, हैंस दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. इफ a इज नेवर 0 तो दिस इज
may be represented in terms of LT and X if A is not never equal to 0. So D is correct option.